Good morning, children. Welcome back to the social session. Children, in yesterday's class, we already have seen the syllabus for the academic year 2020-21. So, actually, before the vacation, we started industrial revolution, children. But the 8th unit, 9th unit and 10th unit are removed from the syllabus. So, we are no more going to deal with those lessons. I am going to start a new unit today, that is the 18th unit, caste discrimination. 18th unit deals with caste discrimination, children. Caste discrimination बोले तो मालूम है, caste मालूम है आपको? Okay. In most of the Hindus, Hindus are further divided into 4 castes. Okay, different castes are present. So this caste discrimination and the struggle for equality you find in the society. So there are many social reformers who fought for this equality in the society. People like B.R. Ambedkar and even Savitribai Phule and many other people, many other social reformers also fought for the equality, social equality in the society. So a large number of caste system is one of the created thing which is a major forms of inequality in the society. In our country especially, no other country in the world has caste system. एक इंडिया में ही है वो. ये हायर कास्ट का है, ये लोअर कास्ट का है, वो ब्राह्मण है, एक शूद्र है बोल के जो caste system है, that is present only in India, and this caste system has very deep roots in our country. From ages together, this caste system is continuing, and for centuries, people have fought against the discrimination, because discrimination बोले तो क्या है जी? Discrimination बोले तो क्या है? Showing the difference. एक को एक तरह देखना और दूसरे वालों को नीचे देखना. सो शोइंग दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेशन. हायर कास्ट वालों को बहुत रेस्पेक्ट करना, लोअर कास्ट वालों को नीचे देखना, जो है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वालिटी दिखाना. सो दिस डिस्क्रिमिनेशन is present in our country for the ages, and in order to overcome all this, our constitution has provided many provisions to end it. इसको ख़त्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉस को प्रोवाइड करे, फिर भी आज तक भी वो डिस्क्रिमिनेशन है. अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा को जाके देखे तो ओके, लोअर जात वालों को एक तरीके से देखते और हायर जात वालों को और एक तरीके से देखते. सो दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कोर्स इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिस हैज़ कम टू एन एंड. हमारे पास भी लोअर कास्ट वाले हैं और हायर कास्ट वाले हैं. इधर वेलमास है, रेड्डीस है, और लोअर कास्ट वाले माला, मादिगा, येरुकला, बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं. सो इन लोगों का डिस्क्रिमिनेशन जो है बहुत तक तो ख़त्म हुआ. ओके, आजकल तो डिस्क्रिमिनेशन दिखाई नहीं दे रही, मगर नॉर्थ इंडिया में अभी भी ये डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है. एंड एलिमिनेशन ऑफ caste discrimination has been one of the major aims of our governments, and in our lesson today we shall learn how to end up this caste discrimination in the society and how to build a social equality. A large number of people in our country think of themselves as belonging to some caste or the other. Of course, even I also feel that we belong to this community and they belong to that community, because there are certain community rules and regulations. Okay, this caste fellow will marry only to this caste, and this caste girl should marry only to this caste. So such kind of community rules are framed here. For that reason, it is still continuing. Of course, now it is being broken slowly. After 50 years from now, आप जब बड़े होते हैं, then there will be no more caste discrimination or caste feeling among the people. They even put at the end of their names also this caste. For example, if you take KCR, कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव जो है वो वेल्मा है, और रेड्डी देखो, जगदीश्वर रेड्डी. ओके, सो ये रेड्डी जो है वो कैस्ट है, राव जो है वो कैस्ट है. नहीं तो इसको देखो, राजैया यादव बोले तो वो एक कैस्ट है. सो उसके नाम के पीछे जो लगाते हैं वो कैस्ट डिस्क्रिमिनेट करती है, कैस्ट को स्पेसिफिकली दिखाई देती है. सो द पीपल ऑफ ए कैस्ट फॉलो सम कॉमन कस्टम्स एंड कॉमन वर्शिप ऑफ ए पर्टिकुलर deity. Many people who follow the caste rules marry only within their own caste. In olden days, people of one caste followed same profession or work. अभी देखो यादव्स है, यादव्स का काम कौन सा था? यादव्स जो बफेलोस ब्रीडिंग और
कैटल ब्रीडिंग जो था उसका काम जो है यादव्स करते थे। मुदिराज जो है वो क्या काम करते थे, वो टैंक्स में फिशिंग करते थे। वैसे एक एक कैस्ट के वाले एक ही प्रोफेशन फॉलो करते थे। और गोल्ड स्मिथ फैमिली जो है वो पूरा गहन, दे यूज टू मेक द ज्वेलरी। सो वो बार्बर कम्युनिटी जो है वो कटिंग करते नहीं, कटिंग वो बार्बर कम्युनिटी है, मंगली। सो ऐसे एक एक कैस्ट वाले एक एक प्रोफेशन, सेम प्रोफेशन दे यूज टू फॉलो। So thus you can see that caste system creates some bonds among a particular group of people and separates them from other groups. And however, the caste system has also given rise to great inequalities in our society and discrimination. So let us see how this happened in our society in our next class, children. Because people are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing. So different kinds of professions are there. So how they are engaged in different kinds of these professions and how these inequalities arise, we'll see in the next class. Thank you, children.